बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा। तो आप सब कैसे होंगे। और आज हम CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट मिड टर्म सॉल्व MCQ के साथ हाजिर हैं। तो इसके अंदर जो लेक्चर कवर है 1 to 22 हैं। 100% करेक्ट MCQs हैं। इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बेसिक रेगुलर क्विज़ेस भी अपलोड हैं। मिड टर्म के हवाले से, फाइनल टर्म के हवाले से भी हमने MCQs अपलोड किए हुए हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह वीडियो से। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। देयर आर डैश टाइप पार्ट्स ऑफ जावा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स. Java languages plus libraries. Java has 2 parts: the core languages, variables, array, objects. The Java virtual machine (JVM) run run the core languages. The core languages is simple enough to run on small device phones, smart cards, PDAs. The libraries. Java includes a large collection of standard library class to provide off-the-shelf code, useful built-in classes that comes with the languages to perform basic tasks. Example of these classes is string, ArrayList, Hashmap, string tokenizers to break string into substrings, date. तो हमारा जो इसका आंसर बनता है वो 2 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। लैंग्वेजेस प्लस लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस का भी मैंने यहाँ पे गिवन कर दिया और लाइब्रेरीज को भी गिवन कर दिया, ओके। तो ऑप्शन हमारे पास जो भी है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। Java uses a dash of type system that must be obeyed at compile times and runtime. 1 मिनट, थोड़ा वेट करें। थोड़ा सा एनिमेशन प्रॉब्लम है। ऑप्शन 1 है फॉर्मल, ऑप्शन 2 है इनफॉर्मल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द notions to classes and object. Java uses a formal OOP type system that must be obeyed at compile times and runtime. This is helpful for large projects where the structure helps keep the various parts consistent. Contrast to Perl, which has a more anything goes feel. तो हमारा इसका जो आंसर बनता है, Java uses a formal object-oriented programming type systems that must be obeyed at compile times and run times. तो formal इसका ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा वर प्रीटी स्लो, ट्रू है या फॉल्स। हाई परफॉर्मेंस टॉपिक हमारे पास। The first versions of Java were pretty slow. Java performance has gotten a lot better with aggressive just-in-time compiler (JIT) techniques. Java performance is now similar to C, a little slower in some cases, faster in a few cases. However, memory use and startup times are both worse than C. Java performance gets better each year as the JVM gets smarter. This worked because making the Java JVM smarter does not require any great change to the Java languages, source code etc. तो हमारा जो बनता है the first versions of Java were pretty slow is a true statement. ऑप्शन जो 1 है true इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Building an application in Java takes about dash% less time than in C or C++. 40%, 50%, 60%, and 70%. Java programmer efficiency. Faster development. Building an application in Java takes about 50% less time than in C or C++. So faster time to market. Java is said to be programmer efficient. तो 50% इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन जो 2 हमारे पास 50%, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Java program source code are compiled into form called Java codes, Java bytes code, Java source, Java program. Bytecode. Java program source code are compiled into a
form called Java bytecodes. The Java compiler reads Java language's source.java files, translates the source into Java bytecodes, and places the bytecodes into classes file. The compiler generates one class file for each class contained in Java source file. तो हमारा जो ये स्टेटमेंट बनती है वो बनती है जावा बाइट कोड्स। ऑप्शन जो 2 है जावा बाइट कोड्स, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन है, जावा वर्चुअल मेमोरी है या बोथ। तो JVM जो है जावा वर्चुअल मशीन है, ठीक है। दी सेंट्रल पार्ट्स ऑफ जावा परफॉर्म इन जावा वर्चुअल मशीन। Java bytecodes execute by special software known as virtual machine. Most programming languages compile source code directly into machine code, suitable for executions. तो Java virtual machine जो है JVM stand for, ओके। तो नीचे इसको मैंने डिटेल में भी बता दिया, ठीक है, डिफाइन भी। तो Java virtual machine ऑप्शन जो 2 है बी है, ये हमारा आंसर इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Java program normally go through dash phases, 3 phases, 5 phases, 6 phases या 8 phases. Java program development and executions steps. Java program normally go through 5 phases. These are edit, compile, load, verify and execute. Okay, कितने हैं? 5 है। तो इनको आपने डिफाइन में भी देख लेना, ठीक है, इनको याद रखना है। समटाइम्स ये डेडिट का, कंपाइल का पूछ लेता है, लोड का, वेरीफाई एग्जीक्यूटिंग के बारे में। तो इसके कितने फेसेस बनती हैं जावा प्रोग्राम के नॉर्मली गो थ्रू? हमारे पास 5 हैं। तो ऑप्शन जो बी है 5 ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इंट आई इज इक्वल टू 4 है और इंट जे इज इक्वल टू 5। इंट का मतलब होता है इंटीजर। कोड है थोड़ा सा दिया हुआ यहाँ पे। तो सिस्टम डॉट फुल स्टॉप आउट फुल स्टॉप प्रिंट इन। तो ये जो होता है ना सिस्टम आउट प्रिंट इन, ये किसी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम लिखते हैं। आपने आपको असाइनमेंट आई होगी तो आपने लिखा होगा हेलो प्लस आई विल प्रिंट डैश ऑन द स्क्रीन। हेलो, हेलो 4 आएगा, ठीक है, या हेलो 5 आएगा प्रिंट में, ठीक है, या हेलो 9 आएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आई होप आप इस जो कोड है इसको समझ लेंगे। कोई भी इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको। स्ट्रिंग concatenation है, प्लस ऑपरेटर इज यूज टू concatenate string। सिस्टम आउट प्रिंट इन हेलो प्लस वर्ड। क्या है यहाँ पे? क्या है? हेलो प्लस आई है, यहाँ पे हेलो प्लस आई की जगह वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। विल प्रिंट हेलो वर्ड ऑन कंसोल। तो हेलो वर्ड प्रिंट होगा, ओके। हेलो प्लस वर्ड, तो हेलो वर्ड प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या है? हेलो आई, तो मतलब हेलो आई प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे हेलो की जगह आई तो नहीं है, लेकिन वैल्यूज दी हुई है। इंट आई इज इक्वल टू 4 है, इंट जे इज इक्वल टू 5। सिस्टम आउट प्रिंट हेलो प्लस आई। वही क्वेश्चन आ गया, विल प्रिंट हेलो 4 ऑन स्क्रीन। हेलो 4 आएगा। क्यों 4 आएगा? 4 इसलिए आएगा कि आई की जो वैल्यू वो 4 के इक्वल है। तो आई की जगह हम क्या लगा रहे हैं? 4 लगा रहे हैं, ओके। तो 4 आ जाएगा। However, system out print I plus j will print 9 on console because both I and j are of type integer। I and j क्या है? integer types हैं, क्योंकि शुरू पे उन्होंने integer दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे 9 कैसे आया? I और प्लस j की जो वैल्यू उनको प्लस करें, 4 प्लस 5 9 के इक्वल होता है। अगर यहाँ hello प्लस j होता तो आना था hello 5, क्योंकि j की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5। तो इस तरह जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी आपको इंटीजर के तौर पे, वही आपको आउटपुट आपने शो करवानी है, ठीक है। सेम टाइम हम ये एमसीक्यूज आपको मैंने बताया। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज आता है, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। कोई इनकी इंटीजर की जगह वेरिएबल हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि इसी रूल के मुताबिक आपने उसका आंसर देना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है प्रिमिटिव डेटाबेस ऑफ जावा इन int float dash bytes, 2 bytes, 4 bytes, 6 bytes या 8 bytes। Primitive data types of Java: Boolean, bytes, 1 bytes, char, short, 2 bytes, int, float, 4 bytes, long, double, 8 bytes।
तो इसका जो आंसर बनता है हमारे पास इन फ्लोट बाइट्स, तो इनका हमारे पास बनता है इन फ्लोट 4 बाइट्स। ओके, क्योंकि जो बूलियन बाइट्स है उसका 1 बाइट इक्वल होता है, 4 या शॉर्ट 2 बाइट्स इक्वल होता है। इंट एंड फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट्स इक्वल है, जो लॉन्ग डबल होगा वो 8 बाइट्स इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनता है 4 बाइट्स, ऑप्शन बी ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हम आपके इतनी एफर्ट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, कम से कम 100 लाइक्स होने चाहिए। ठीक है, वीडियो के ऊपर वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो को जो चैनल है हमारा उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें। कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो लाजमी उसको कमेंट किया करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। Question 10 है stack and heap are two important memory areas. True है या false है? Stack versus heap. Stack and heap are two important memory areas. Primitive are created on the stack while object are created on heap. तो ये two important memory areas ही हैं। तो ये जो statement है true है। Okay. Next चलते हैं question number 11. Accessible only to the class itself and to its subclass, this statement is dash. Default, public, private and protect. Public accessible anywhere by anyone. Public क्या है? Accessible है anywhere by anyone. Private क्या है? Only accessible within this class. Protect क्या है? Accessible only to the class itself and to its subclass or other class in the same packages. Default क्या है? Default access if no access modifier is provided accessible to all classes in the same packages. तो हमारे साथ पूछा गया accessible only to the class itself and to its subclasses this statement. तो जो protected accessible only to the class itself and to its subclass or other classes in the same packages. तो जो protect है ऑप्शन 4 ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12. JVM provides a dash argument default constructor only if a class does not define its own constructor. 0 argument है, 1 argument है, 2 argument है या 3 argument. Constructor same name as same class name, does not have a return type, no initialization list. JVM provide a 0 argument default constructor only if a class does not define its own constructor. Destructor क्या है? Are not required in Java class because memory management is the responsibility of JVM. तो JVM जो प्रोवाइड करता है हमें 0 आर्गूमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे पास ए 0 ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30. What does polymorphisms mean in the context of object-oriented programming? O programming, ठीक है। Having multiple variables है, having multiple properties है, having multiple behavior है, having multiple constructors है। तो polymorphic literally means of multiple shapes, and in the context of O, polymorphism means having multiple behaviors. A parent class reference can point to the subclass object because of is a relationship. For example, our employees reference can point to employee object है, teacher object है, manager object है। तो हमारे पास जो आंसर इसका बनता है polymorphism मीन जो बनता है having multiple behavior। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से बनता है having multiple behavior, जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14. What are the two types of type casting? Implicit casting है and explicit casting है, static casting है या dynamic casting है, automatic casting है या manual casting है, up casting है या down casting है। Type casting. In computer science, type conversions are type casting refer to change an entity of one data type into another. Type castings can be categorized into two types. Two types तो पहले वो बताया हुआ, upcasting and downcasting. Converting a smaller data type into bigger one. Implicit, we don't have to do something special, no loss of information.
डाउनकास्टिंग के अंदर क्या है, कन्वर्टिंग अ बिगर डाटा टाइप इनटू अ स्मॉलर वन, एक्सप्लिसिट नीड टू मेंशन पॉसिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है, ये इसकी टू टाइप्स हैं कास्टिंग। अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग नीचे डी में भी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ही सेम है, इसमें लिख दिए गए हुए हैं, तो ये दोनों ही इसके आंसर बनते हैं। मतलब अप कास्टिंग टू टाइप्स दी हुई हैं, ठीक है, एंड डाउन कास्टिंग, और इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ये दोनों ही इसके ए एंड डी आंसर है। ओके, या मिस्टेक से दोनों सेम दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 50। What do the common methods like get, parentheses, size parentheses, and is empty parentheses in Java collections typically provide? Access to the object stored in the collection, modifications of the object stored in the collection. Third option है sorting of the object in the collection या removal of object from the collection. Collection design. All classes almost provide same methods like get, parentheses, size parentheses, is empty parentheses, etc. These method will return the object stored in it, number of objects stored, and whether collections contains an object or respectively. Java collections are capable of storing any kind of objects. Collections store objects. This is similar to using a void in C. Therefore, downcasting is required to get the actual type. For example, if string elements जो है हमारे पास in stored in a collection, then to get it back we write string element क्या है हमारे पास is equal to string array list dot get I। तो हमारे पास जो आंसर बनता है R classes provide C methods like get, size and empty। तो ऑप्शन जो हमारे पास वन है access to the object stored in the collection, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। What does the add object method in a collection do? Option A है returns the number of element in the collection, add a new element to the collection, checks if the collection is empty, removes an element from the collection. Collection message. Some basic messages methods are constructor है हमारे पास, ठीक है, creates a collection with no element, int size है, returns the number of elements in a collection है, booleans add object है, add a new element in the collection, returns true if the element is added successfully, false otherwise। तो हमारे पास add a new element in the collection जो हमारे पास given है यहाँ पे add object के अंदर दिया हुआ, तो add object हमारे पास ये है, तो in a collection do, तो add a new element to the collection, add a new element in the collection जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे बी, ये इसका करेक्ट आंसर है, adds a new element to the collection। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17। इन हैश मैप एलिमेंट आर स्टोर्ड इन व्हाट फॉर्म? की वैल्यू पेयर फॉर्म है, वैल्यू की पेयर फॉर्म है, ओनली कीज आर स्टोर्ड है, ओनली वैल्यूज आर स्टोर्ड, हैश मैप। हैश मैप stored element in the form of key value pair form. A key is associated with each object that is stored. This allow fast retrieval of that object. Keys are unique। तो हमारे पास जो बनता है हैश मैप एलिमेंट स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर फॉर्म, तो की वैल्यू पेयर फॉर्म जो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट, ये इसका आंसर है, की वैल्यू पेयर फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। What type of menu is used for the address book functionality? J option pane based menu है, console based menu है, GUI based menu है, या command line menu। Problems. We want to build an address book that is capable of storing name, address, phone, number of person. Address book provide functionality in the form of J option pane based menu. This feature list include add to add a new person record, delete to delete an existing person record by name, search to search a person record by name, exit to exit from application। तो add, delete, search and exit इसकी जो फीचर लिस्ट है,
तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, एड्रेस बुक प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी, तो जे ऑप्शन पैन बेस्ड मेन्यू, जे ऑप्शन पैन बेस्ड मेन्यू, ऑप्शन ए ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 90। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर? वन टाइप्स, टू टाइप्स, थ्री टाइप्स एंड फोर टाइप्स। Types of error. Generally, you can come across three types of error while developing software. These syntax, logics, and runtime errors. तो इनको अच्छी तरह से आपने अपने जहन में रखना है। Syntax errors, logics errors, runtime errors define समझ आ जाता है। Syntax errors arise because the rules of the languages are not followed. Logic error indicate that logic used for coding does not produce expected output. Runtime error occurs because the program tries to perform an operation that is impossible to complete. तो ऑप्शन हमारे पास जो सी है 3, ये इसके आंसर है, 3 एरर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। How are exceptions represented in Java? As primitive data type, as keyword, as object, as tree. Exception in Java. An exception in Java is represented as an object that's created when an abnormal situation arises in the program. Note that an error is also represented as an object in Java, but usually represent in unrecoverable situations and should not be cached. The exception object stores information about the nature of the problem. तो जो exception Java है ना represent करता है as object, तो ऑप्शन जो 3 है हमारे पास as object, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 21। What are the two broad categories of exception in Java? Syntax and logic exception है, runtime and compilation exception है, unchecked and checked exception या networks and file exception. Type of exceptions. Exceptions can be broadly categorized into two types: unchecked and checked exceptions. Unchecked exception, subclasses of runtime exceptions and error, does not require explicit handling. Runtime errors are internal to your program, so you can get rid of them by debugging your code. Checked exception क्या है? Must be catched or declared in a throw clause. Compiles will issue an error if not handled appropriately. Subclasses of exceptions other than subclass of runtime exception. तो टू इसकी टाइप्स हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन है एंड चेक्ड एक्सेप्शन है। तो ऑप्शन जो 3 है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। Why do we need abstraction when dealing with different devices in programming? To make the code more readable and maintainable, to simplify the process of handling exceptions, to provide a way to represent concurrent execution, because different devices require different way of communication. The concept of streams. It is an abstraction of a data source sink. We need abstraction because there are a lot of different devices, files, console, networks, memory, etc. We need to talk to the device in different ways: sequential, random, access by lines, etc. Streams makes the task easy by acting in the same way for every device. तो इसके अंदर जो concept of stream है, different devices है और different ways है। तो ऑप्शन जो हमारे पास बनता है जी 4, because different devices require different ways of communication. Okay. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। Which version of JDK introduced the classes with the word stream in their name? JDK 1.0, JDK 1.5, JDK 8 and JDK 11. Stream classification based on data. Two types of classes exist. Classes which contain the word stream in their name are bytes oriented and are the here since JDK 1.0. These streams can be used to read-write data in the form of bytes. Hence, classes with the word stream in their name are bytes oriented in the nature. Example of bytes oriented streams are file input stream, object output stream, etc.
Classes which contain the word reader writer are characters oriented and reads and write data in the form of character. Readers and writes came with JDK 1.1. जो वर्ड रीडर एंड राइटर है वो JDK 1.1 है, तो जो हमारे पास क्लासेस स्ट्रीम की दी गई हुई है वो हमारे पास JDK 1.0 है। तो ऑप्शन जो हमारे पास ए है JDK 1.0, ये इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रीम का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। What is the purpose of abstract classes in Java? To define a complete implementation of a class, to provide a partial implementations and service as a blueprint for subclass, to instant to instantiate object directly, to define only static method. Abstract classes. Abstract classes are used to define only part of an implementation because information is not complete. Therefore, an abstract classes cannot be instantiated. However, like regular classes, they can also contain instance variables and methods that are fully implemented. The class that inherits from abstract class is responsible to provide details. तो हमारा जो आंसर बनता है to provide partial implementation and service as a blueprint for subclasses. Next चलते हैं question number 25. What happens if a class does not provide definitions for all the methods is an interface it implements? The class will compile successfully. The class will throw an exceptions at runtime. The class will be marked as abstract. The class will not be compiled. So implementation using interface. Class implement interface. Implementing an interface is like signing a contract. A class that implements an interface will have to provide definition of all the methods that are present inside an interface. If the class does not provide definition of all methods, the class would not compile. We have to declare it is an abstract class in order to get it compiled. Relationship between a class and interface is equal to respond to while is the relationship exists in inheritance. तो हमारा जो आंसर इसका बनता है करेक्ट, द क्लास विल नॉट बी कंपाइल्ड। यहाँ पे देखें ना, तो the data present inside an interface, if the class does not provide definitions method, class would not compile। तो ऑप्शन जो 4 है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्लास विल नॉट कंपाइल। क्वेश्चन नंबर है 26. Which packages in Java provide classes for creating GUI component? Java.io, Java.lang, Java.awt या Java.util. Support for GUI in Java. The classes that are used to create GUI component are part of Java.abt या Java.swing packages. Both these packages provide rich set of user interface component। तो इसके अंदर दो पूछे गए हैं, ठीक है, जावा एक्स डॉट स्विंग है या जावा डॉट AWT है। तो हमारे जो ऑप्शन है फॉर जावा डॉट AWT थर्ड वाला ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 27। What is the characteristics of swing components in Java? They are written, manipulated and displayed in C++. They are platform-specific components. They are written, manipulated, and displayed completely in Java. They requires an external library to function. Java X.Swing packages. These are the newest GUI components. Swing component are written, manipulated, and displayed completely in Java. Therefore, also called pure Java component. The swing component allow the programmers to specify a uniform look and feel across all platforms. Swing components are often referred to as lightweight component as they are completely written in Java. Several swing components are still HWC या JFrame etc. तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बनता है written, manipulated and display
written, manipulated and displayed completely in Java. ऑप्शन जो 3 है, they are written, manipulated and displayed completely in Java, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। Which step involves building objects that can handle event? Step 1 है creating event generators, step 2 है creating event handlers, registering handler with generator, और step 4 है building event component। तो event handler steps for a programmer, the event handler is a 3 steps process in term of code। step 1 है create component which can generate event generator, step 2 है build component objects that can handle event handler, step 3 है register handler with generator। तो हमारे पास पूछा गया था building objects can handle events, तो building components objects that can handle events, तो event handlers ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। creates event handlers 2 वाला जो ऑप्शन है स्टेप 2 ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 29। What does the JVM Java Virtual Machine do if it finds a listener and handler for an event? Discard the event, store the event in a queue, process the event immediately, या send the event to all listeners। JVM Java Virtual Machine receive an event whenever one is generated, looks for the listeners handlers of the events, if just delegates it for processing, if no discard it events। तो हमारा इसका जो ऑप्शन बनता है send an event to all listeners। When buttons generates an action event, it's sent to JVM which puts it is an event quiz। After that, JVM function appropriate to dequeue event subjects sent to the listeners that are registered in the bottom। तो यहाँ पे जो लाइन दी हुई है all the listeners that registered, तो send the events to all the listener ऑप्शन जो 4 है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। Which type of GUI component can trap mouse event? Component that inherit from the mouse listener class, component that inherit from the motion listener class, component that inherit from the component class, component that inherit from the JFrame class। Handling mouse event. Mouse event can be trapped by the GUI component that inherit from component classes, for example JPanel, JFrame, JButton। To handle mouse event, 2 types of listener interface are available, mouse motion listener है और mouse listener है। तो हमारा यहाँ पे आंसर बनता है इसका component that inherit from mouse motion listener class। ऑप्शन जो इसका 2 है ये इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। Which interface has an associated adapter class named Windows adapter? एक्शन लिसनर है, विंडो लिसनर है, माउस लिसनर है या की लिसनर है। Adapter classes for listener interface containing more than one event handling method JDK defines adapter class। Example are for window listener है, window adapter है, for mouse motion listener है, mouse motion adapter है, and many more। तो यहाँ पे जो है विंडो अडेप्टर का पूछा गया था, विंडो अडेप्टर ये यहाँ पे गिवन है, तो ये किसकी जो लिंक आ रहा है फॉर विंडो लिसनर का, तो ऑप्शन जो 2 है विंडो लिसनर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 32। हाउ कैन यू एक्सेस दी ODBC डाटा सोर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स इन विंडोज? तो प्लीज़ अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। ऑप्शन 1 है स्टार्ट प्रोग्राम ODBC डाटा सोर्स, स्टार्ट कंट्रोल पैनल डाटा सोर्स ODBC, स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स डाटा सोर्स, स्टार्ट एसेसरीज डाटा सोर्स।
तो setup system DSN. After creating database, you have to set up a system data source name DSN. DSN is a name through which your system recognizes the underlying data source. Select start, setting, control panel, administrative tools, data source, ODBC. तो यहाँ पे देखते हैं जो ऑप्शन हमारे पास 3 है, स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, डाटा सोर्स, ये यहाँ पे गिवन है। तो ऑप्शन जो 3 है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज a result set can contain? 0, 1, -1, unlimited. Get max row, set max row, int. Used for determine the number of rows as the result set may contain. By default, the number of rows are unlimited. Return value is 0, or by using set max row int, the number of rows can be specified. तो जो नंबर ऑफ रोज है वो है अनलिमिटेड यहाँ पे दी हुआ है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू 0 है, वैसे 0 नहीं है, रिटर्न वैल्यू 0 है, वैसे अनलिमिटेड है। तो ऑप्शन 0, 1, -1, अनलिमिटेड, डी इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 34। What does the result set cursor point to initially? The last row of data, the first row of data, before the first row 0, after the last row. Result set. A result set contains the result of the SQL query represented by a table with row and columns, maintains a cursor point to its current row of data. Initially the cursor positions before the row 0, first row has an index. तो result set cursor point to initially दिया हुआ है, तो initially the cursor positions before the row 0। तो ऑप्शन जो 3 है before the first row 0 ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। Which JDBC drive type is also known as the native API partly Java drive? टाइप 1 है JDBC माइनस ODBC ब्रिज है, या नेटिव API पार्टी जावा ड्राइवर है टाइप 2। टाइप 3 है नेट प्रोटोकॉल ऑल जावा ड्राइवर है, या नेटिव प्रोटोकॉल ऑल जावा ड्राइवर। तो JDBC ड्राइवर टाइप्स हैं। JDB ड्राइवर टाइप्स are divided into 4 types of levels हैं, 4 levels of types हैं इसकी। Each types define JDBC driver implementation which increasingly higher level of platform independence, performance, deployments and administration. These 4 types are टाइप 1 जो है JDBC ODBC ब्रिज है, टाइप 2 है नेटिव API पार्टी जावा ड्राइवर है, टाइप 3 जो नेट प्रोटोकॉल है, 4 जो है नेटिव है। तो नेटिव API पार्टी जावा ड्राइवर जो हमारे पास टाइप 2 है ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। What is the purpose of the paint component method in Java? It initializes the graphical user interface GUI component. It handles mouse and keyboard events. It performs custom painting and drawing. It updates the data model of the application. Paint component. It is main method for painting. By default, it first paints the background. After that, it performs custom painting, drawing circles and rectangles. तो ऑप्शन जो हमारे पास बनता है, इट परफॉर्म कस्टम पेंटिंग एंड ड्राइंग्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए कस्टम पेंटिंग एंड ड्राइंग्स का हमने बताया हुआ नीचे। तो ऑप्शन जो 3 है ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इन ऑर्डर टू एनिमेट एन ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल विच मेथड नीड टू बी कॉल्ड कंटिन्यूअसली? एनिमेट ऑब्जेक्ट, मूव ऑब्जेक्ट, अपडेट ऑब्जेक्ट या पेंट कंपोनेंट? हाउ टू एनिमेट? If we want to animate something like ball moving from one place to another, we constantly need to call paint component method and to draw the shape ball etc add new place means add new coordinate। तो बॉल जो मूव करेगी एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ तो वो है कॉल पेंट कंपोनेंट करेगा। ओके, तो ऑप्शन जो 4 है पेंट कंपोनेंट ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। Which version of Java is commonly supported by most modern browsers? Java 1.0, Java 1.2, Java 1.4 या Java 8? Applet supports. Most modern browsers support Java 1.4 if they have the appropriate plugin.
Sun provides an application applet people to view applets without using browser. In general, you should try to write applets that can be run with any browser. तो जो जावा कॉमनली सपोर्ट करता है मोस्ट मॉडर्न ब्राउजर को वो 1.4 करता है। 3 वाला जो ऑप्शन है जावा 1.4 ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। When an object is recreated from a string, what is the type of the object initially? Primitive type है, string है, object and string. Automatically reading system knows how to read the data from strings and recreate object in memory. The recreated object is the type object, therefore downcasting is required to convert it into actual type. तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड स्ट्रीम्स और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियली जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट। ऑप्शन जो 3 है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।